Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 26th of September. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till then. In this video we are talking about capacity building and human resource development scheme. Then we will be talking about 3822.31 crore 4-lane NH 139 water highway project in Bihar. Then cabinet approvals for 24th of September. Next thing we will be discussing is about an MOU that has been signed with CBDT to enhance the operational effectiveness. All these things and many more will be discussed, so stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. We are talking about cabinet. Union cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has recently approved the capacity building and human resource development scheme with 2277 crore rupees, right? This initiative will provide a platform to whom? To young enthusiastic researchers aspiring to build careers in universities, in industry, in promoting research and development, right, in various laboratories to carry out the research and innovation. So for them, this capacity building and human resource development initiative has been launched. This will be guiding various scientists, professors, right, where they will be helped or where they will be provided with various resources to carry out their research. Correct. And the amount that has been allocated here is 2277 crore rupees. It is for 21-22 till 25-26, right? And it was approved for a period of 15th Finance Commission, right? CSIR will be playing an important role here, that will be providing all the necessary details and necessary data for the research and development here, right, to these young scientists and innovators and researchers. If we talk about CSIR, who is the Director General here? Dr. N. Kalasilve. Right, students, so take a note of this. So, and here you can see sub schemes. These schemes has been launched here that will be promoting the research and development further. Then if I talk to you about which state became the 5th fully literate state under Lula scheme, it is Himachal Pradesh. Then 28th edition of the Universal Postal Congress was hosted by Dubai, right? Then recently India and Israel, they have signed a BIT, that is your bilateral investment treaty, that will boost trade between these two countries, right? Apart from this, a musical voyage was launched on Brahmaputra to mark Bhupen Hazarika's centenary. What was the name of this musical voyage? This is your Bistirna Parore, right? This is that musical voyage. Then next is CCEA. They have approved 3822 crore rupees 4-lane NH 139 highway project. Take a note of this, students, important. Now this, first thing, remember, CCEA, they have approved 2 major infrastructure projects in Bihar that will boost the connectivity, right? First is your 4-lane National Highway 139, and it will be doubled here. That means here the construction will be done of this particular highway. Let me show you, right? This is a 4-lane Sahibganj Arej Batia section of NH 139W. This will be the cost, and this is the length here, right? And next thing is doubling of the Bakhtiar Rajgir Tilya, that is Bakhtiar Rajgir and Tilaiya railway line. It is of 104 kilometers and 2192 crore rupees will be spent here. So these are the 2 projects that has been recently approved that you need to know about, right? Then next question asked is that who participated in the Gyan Bharatam portal? Gyan Bharatam conference, not portal. Portal is a website, but here this Gyan Bharatam portal was also launched, right? So it was held in New Delhi, and it is Prime Minister Narendra Modi who recently took part
in this, or who participated in this Gyan Bharatam conference. Then recently Indian Navy, they have commissioned INS Aravali. Where it was commissioned? It was commissioned in Gurugram, Haryana. Right? Then first green hydrogen research and development conference, it was held where? It was held in New Delhi, and Prahlad Joshi inaugurated this first edition of the green hydrogen research and development conference in New Delhi. Moving on, students, if we talk about PM Gati Shakti, this was basically launched on this was your national master plan that was launched on 13th of October 2021 for providing multimodal connectivity infrastructure to various economic zones. It is driven by 7 engines, that is railway, roads, post, waterways, airports, mass transport, logistic infrastructure, and implemented by DPIIT under the Ministry of Commerce and Industry. Remember, this date can be asked. That when was your PM Gati Shakti plan launched to boost the logistics sector of India? So it is 13th of October 2021. Next is, students, we are talking about cabinet committee. That cabinet committee, right? Who is this cabinet committee is chaired by whom? It is chaired by Prime Minister Narendra Modi, right? And Prime Minister Narendra Modi under this Union Cabinet has approved certain approvals. First approval is that your productivity linked bonus, right? Productivity linked bonus for 78 days to railway employees, right? And second is your approved the expansion of postgraduate and undergraduate medical education capacity, right? Seats has been increased to 5,000 and 5,023 respectively in the medical colleges. So these are the two approvals that you need to remember here, right? Let me show you. First scheme here, you are seeing that the seats in the postgraduate and undergraduate has been increased, and apart from this, first is that the PLB, that is your production linked bonuses, will be provided to the railway employees, right, students? Then apart from this, one more thing, remember, if I ask you that recently who inaugurated the national conference on women empowerment that was held in Tirupati? So Lok Sabha Speaker Om Birla ji, he inaugurated this conference. Then our country India, we will be hosting the 89th edition of the International Electrotechnical Commission General Meeting that will be held in New Delhi, right? Then which ministry hosted the Sarpanch Samvad? Sarpanch Samvad. This will be hosted by, this is a conclave that will be hosted by the Jal Shakti Ministry or Ministry of Jal Shakti. Next is Comptroller and Auditor General of India has signed an MOU with CBDT to enhance the operational effectiveness, right? This will promote collaboration in training, research and technology in New Delhi, right? And this will enhance the operational effectiveness. This is important. This MOU will be focusing on various initiatives that includes training workshops, joint seminars, sharing audit insights based on the advanced data analytics and many more, right? Then next question asked here is, which cancer vaccine have shown 100% success in early human trial, right? It is a vaccine of Russia, that is Entromix cancer vaccine, right? It is of Russia that has shown 100% success in the early human trials, right? Then apart from this, world's first AI generator minister to fight corruption has been launched by Albania, right? What they have launched? First AI powered minister, right? That will be fighting the corruption in that area in Albania. Next, Piyush Goyal inaugurated the AEPDA's first regional office in Patna, Bihar. So direct question, that AEPDA is your Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. Their first regional office has been launched where? In Patna, Bihar, right? And who inaugurated it? Inaugurated by Piyush Goyal ji. This will bolster the agriculture export of Bihar, right? Better support will be provided to the farmers here in exporting, in marketing of their organization, and even the food process farmer producer organizations will be benefited here. Then here only, students, if I ask you, tell me recently Asian Development Bank or India and Asian Development Bank, they have signed a $126 million pact, and it is to boost the sustainable tourism in which state of India? It is to boost the sustainable tourism in Uttarakhand. So India and Asian Development Bank signed this $126 million loan agreement.
Then in the month of August, what was the retail inflation? It was 2.07%. If we talk about NPCI, National Payment Corporation of India, they have announced that new UPI to UPI P2M transaction limit, right? New transaction limits has been announced here, that is peer to merchant transaction limits, that will be starting from 15th of September. Right? Also, SBI, that is State Bank of India, they have raised the auto sweep threshold to 50,000 rupees. That means if an individual have a certain amount of money above, for example here, if it is 50,000, above 50,000, that amount in that saving account will be automatically converted into the fixed deposit, and when it will be going down, the amount will be coming back from fixed deposit to the account. Next is Ministry of Labor and Employment. They have signed an MOU with Zepto to enhance the employment opportunities. I repeat, Ministry of Labor and Employment, they have signed this MOU with Zepto, that is a quick commerce company, to enhance youth employment opportunities on the National Career Service portal. With this, what will happen is better job opportunities will be provided, and it is expected that the Zomato has promised 10,000 jobs so far, right? This will enhance the job opportunities for the youth in India. All right, so under this MOU, Zepto will be providing 10,000 job openings, creating a consistent and organized pathway for urban employment. There is eSharam also, student. What is this eSharam? This partnership with eSharam will help to formalize and upskill the gig workers with eSharam registration. Social security schemes will be able to provide it to these gig workers through this eSharam portal. Right? So this thing is about providing job opportunities and also for social security of the gig workers. Then who has been appointed as the 15th Vice President of India? CP Radhakrishnan. He was the former Governor of Maharashtra. Then who has been appointed as the Chief Executive Officer of Hero Motorcorp? Hero Motorcorp. So Harshvardhan Chitaleji has been appointed here as the Chief Executive Officer. Next is International Affairs, students. Our defense minister, as you can see him in the picture, Rajnath Singh, was on a visit to Morocco from 22nd of September to 23rd of September, right? And this marks the first ever visit by Indian defense minister to North African nation, that is Morocco, recently. And here MOUs were signed on defense cooperation, correct? And here Tata Advanced System Limited, their defense manufacturing unit, right, will be set up in Morocco. So India's Tata Advanced Systems Limited, they are setting up a defense manufacturing unit, and where they are setting up this will be set up in Morocco. This newly inaugurated facility is India's first ever defense manufacturing plant that is located in Africa, and it is the largest in Morocco. Very important, students, take a note of this. And here wheeled armored platform vehicles will be developed. Next is banking and finance, NIPL, that is your NPCI International Payments Limited, and QNB. QNB is your Qatar National Bank. They have rolled out the UPI payment services for the Indian travelers in Qatar. That means in Qatar, the UPI facility will be provided to the Indian travelers there, people who go for tourism there, right? And this UPI service will be enabled for the merchants. That was first live at the Qatar duty free at the Hamad International Airport in Doha, right? And now we will be able to see that further multiple other locations this facility will be provided. And with this development, we are seeing that Qatar became the 8th country where UPI has been allowed. Bhutan, France, Mauritius, Nepal, Singapore, Sri Lanka, UAE, and now is Qatar, where this facility will be available. Very important, take a note of this. Next students, apart from this, if I ask you who has been appointed as the chairman of NSE, so Injeti Srinivas appointed as the chairman of NSE. Shushila Karki, right? She has been appointed as the interim Prime Minister of Nepal, right? She has been appointed as the interim Prime Minister of Nepal. Take a note of this. Then apart from this, if I ask you that who has been appointed as the director of All India Institute of Ayurveda, AIIA, so Professor Pradeep Kumar Prajapati has assumed the charge as the director of AIIA, that is All India Institute of Ayurveda. Next is RBI. They have signed a renewed SOC to FX Global Code. What is this SOC? Statement of Communication. So RBI, they have reaffirmed their dedication to global best practices in the foreign exchange market by reviewing the Statement of Commitment to the FX Global
code. Take a note of this. And RBI Act as a market participant as defined by the code is committed to conducting their FX market activities as per the principles of the code. Right. So what is the main aim here? That the code is a set of international principles of good practices. Right. It is aimed at promoting integrity and effective functioning of the wholesale FX market. Right. Take a note of this. FX is your foreign exchange basically. Right. Next, apart from this, if I ask you students, tell me recently who received the National Teacher Award recently. So Sikkim's Karma Tempo received the National Teachers Award 2025. Right. Then apart from this, Indian American teen Tejasvi Manoj, right, named as the Time Magazine's Kid of the Year 2025. Can you tell me why? This is your homework. Tell me why he has been named as the Kid of the Year 2025. Next is SEBI has raised the custodian net worth requirement to 75 crore rupees for risk management. I repeat, SEBI, they have raised the minimum net worth requirement for custodians from existing 50 crore rupees. It has been increased to 75 crore rupees, right, strengthening the risk management system. SEBI, they introduced this new change amending the existing SEBI custodian regulations of 1996. Correct. And this will be coming into force in the next 6 years. The existing custodians, they are required to meet the new capital requirement within 3 years of the date of the new regulations has commenced. Right. And as per the SEBI direction, the custodians, they are required to implement internal control and financial and operational measures to prevent financial loss due to theft, fraud, professional misconduct and various other things. Right. Next students, also remember who was honored with the PV Narasimha Rao Award recently for economic contribution. So late Manmohan Singh ji, right, our former Prime Minister of India, he was honored posthumously, means after his death he was honored with this PM Narasimha Rao Award, that is for his contribution to the economic development in India. Then recently ISRO, they have transferred small satellite launch vehicle technology to whom? To Hindustan Aeronautics Limited. And this is the 100th agreement of this transfer of technology, TOT, right, that will boost India's space industry. Next is RBI, they have allowed standalone traders to trade in rupee in NDF market. What is this NDF market? NDF market are those markets where the forward contracts on currencies are settled without actual delivery of the currency, right? I repeat, NDF, that is your non-deliverable forward, right? This is a market where an offshore market, or basically it is an offshore market where the forward contracts on currencies, they are settled without the actual delivery of the currency. So RBI has allowed the standalone traders to trade in rupee in the NDF market, that is your non-deliverable forward market. Remember this. Then apart from this, Indian Armed Forces, they recently participated in an exercise by the name Zapad 2025 that was held in Russia, right? Then apart from this, our country India, right, we have hosted the 5th edition of the Coast Guard Global Summit 2027. We will be hosting this 5th edition of the Coast Guard Global Summit 2027, and where we will be hosting it? We will be hosting it in Chennai, Tamil Nadu. Virat Kohli has retained the top Indian celebrity brand rankings at $231.1 million. See, Kroll, this is a Kroll, this is an organization. They have released this celebrity brand valuation report, and according to this report, it is talking about that how much a brand is being sponsored by various companies, right, or how a particular superstar is being sponsored by various brands, right, and what is their value in the market, right, how much traction of the traffic they are generating for a particular brand. If a particular brand is say for example giving ads to Virat Kohli, then how much amount of traffic he can generate, what is the impact that he can create for their particular brand, right? On that, valuations are also created, and they receive hefty amount of money for even a single post that they upload on their social media platforms, right? So Virat Kohli, he has secured the top position here in the Kroll Celebrity Brand Valuation Report, and this is the 10th edition of this report that was released recently, and Virat Kohli secured the top position with $231.1 million. Let me show you the list. Virat Kohli on first, Ranveer Singh on second, Shah Rukh Khan third, fourth Alia Bhatt, and fifth Sachin Tendulkar, as you can see here, and here are their brand valuation.
Next is India gets ICAO Council President Certificate for the Aviation Safety Oversight. What is this ICAO? It is your International Civil Aviation Organization Council President Certificate. This is for the recognition of its significant progress in establishing an effective aviation safety oversight system, right? With this, what will happen is the safety of the surveillance will be increasing, right? Better systems will be implemented here with new technologies, right? That will make sure that the safety of the aircrafts are priority and they should be taken into consideration, right? And this will promote safety here in this section, right? And this certificate, it is awarded based on the results of a universal safety oversight audit program that is continuously monitoring the approach with which a country's compliance are implemented, right? So India has get this ICAO Council President Certificate for the aviation safety oversight. You need to know this only, that question will be asked that ICAO Council President Certificate was granted to which country recently? It is our country, India, right? Then recently there was an exercise, that is multinational exercise Pacific Reach 2025. In this, which Indian naval ship took part? It is INS Nistar that took part in this particular exercise. Then next is appointments. ACC has extended the tenure of General Anil Chauhan as the CDS and the Secretary of the DMA. DMA is your what? Department of Military Affairs. So Appointments Committee of the Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has extended the tenure of General Anil Chauhan as the Chief of Defence Staff and the Secretary of the Department of Military Affairs under the Ministry of Defence till 30th of May 2026. Direct question. Then apart from this, remember students, recently Indian Navy has received the second indigenously built anti-submarine warfare shallow watercraft by the name Andro. It was delivered by Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited. Next is DRDO and SFC. They have conducted the test launch of Agni Prime missiles from RBML. What is this RBML? It is your rail-based mobile launcher, and you can see this is the train here, and there is a launcher at the back of this particular engine on the railway tracks, right? And through this launcher, this launcher has launched this Agni P missile, that is your Agni Prime missile, right? Why this is important? Because through railways, right, we are now able to launch this intermediate range Agni Prime missile. Very important, right? It is a game changer and it is contributing to the India's defense because we have a large network of railways. So from anywhere we will be now able to launch these Agni Prime missile. This is a first of its kind launch carried out using a specifically designed platform for the launch of this Agni Prime missile. This Agni Prime missile, it is a two-stage surface to surface missile. It has a range of almost 2000 kilometers. Next, and from where this was tested? It was tested from the Abdul Kalam Island, Odisha coast only, right? And it is the first ever trial of the RBML. RBML, as I mentioned, it is your rail-based mobile launcher. Then apart from this, students, recently remember our country, India, we have won the Men's Hockey Asia Cup 2025 by 4-1, right? We defeated South Korea in the finals. Finals were held at Rajgir. Next, remember ISRO and Scandier Electric, they have extended the partnership for space mission automation. See, automation, when it is coming into play, we can automatically assume that we are talking about AI. AI will be used here for automation, right? And ISRO, right, they have extended their partnership with the France-based Schneider Electric SE to bolster or to enhance the automation at its launch operation site, right? This collaboration will enhance the automation systems at Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh, right? Take a note of this. I repeat, this partnership is active for 15 years and it will leverage the automation technology to support ISRO's growing portfolio of the space mission, right? The systems have already been contributed to various missions such as your Chandrayaan 3, GSLV F-16, Nisar mission, and many more. Moving on to sports, 2026 AFC Futsal Asian Cup qualifiers. Here, India registers the first ever international victory. I repeat, India's first national futsal team made history by recording the first ever international victory, defeating Mongolia by 3-0 in the finals. This was held at Kuwait. Directly remember. Then apart from this, we are talking about Italian Grand Prix. It was won by
Max Verstappen, right? Then apart from this, in men's hockey Asia Cup, we saw that Indian men's team has won it. But in the women's hockey Asia Cup, India finished runner-up. That means we secured second position here. Just a minute, students. I think the battery is about to go down. Just give me a minute, right? He was honored with Padma Shri in 2016 and Padma Bhushan in 2023, both in the field of literature and education. He was honored with Sahitya Academy Fellowship in 2015. Right? Take a note of this. Next is important is National Ayurveda Day, observed on 23rd of September. Right? It is to raise awareness about the Ayurveda and how it can prevent and treat a wide range of the health issues. This year it was the 10th edition of this day that was observed. Then there is a theme here, theme being Ayurveda for people and planet is the theme here that you need to remember, right? Then Grandparents Day, we observe this on 8th of September. Then International Day to protect education from attack on 9th of September. World Suicide Prevention Day observed on 10th of September. World First Aid Day observed on 11th September. National Forest Martyrs Day observed on 11th September, right? International Day of Police Cooperation, International Day of Police Cooperation observed on 7th September. So all these things are important, students, right? Take a note of this. Then next is your World Pharmacist Day observed on 25th of September, and it is to celebrate the pharmacist's key role as a drug expert and accessible healthcare provider in building the healthier communities worldwide. There is a theme here that you need to remember, theme being think health, think pharmacist. Next is your Antyodaya Divas, important, observed on 25th of September. It is to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay, the former Bharatiya Jan Sangh president and noted philosopher. This year it was 109th birth anniversary of him that we observed, correct? And first time this day was observed in 2014. Next students, it's time for revision part. Let's move on to the revision section now. DRDO and Indian Navy successfully conducted the combat firing of indigenously designed dash with a reduced explosive payload. So DRDO and Indian Navy, they successfully conducted the combat firing of the indigenously designed multi-influence ground missile, right, with a reduced explosive payload. This system will enhance Indian Navy's defense against modern stealth ships and submarines that will offer advanced detection and engagement capabilities. Next, ATEL Africa has partnered with Space Exploration Technologies Corporation, that is SpaceX, to deploy dash low Earth orbit satellites internet service across Africa. So it is to deploy Starlink low Earth orbit satellite internet service across Africa. And this Starlink is also owned by Elon Musk. In India also, it is ATEL and Jio, with which Starlink has partnered in order to provide internet services in India. Next, Paras Defence and Space Technologies Limited, they have signed a memorandum of understanding with which company to establish a joint venture for understanding, manufacturing and supplying hydrogen powered drones in India. So they have partnered with whom? They have partnered with Heaven Drones Limited, correct? This MOU has been signed, or this joint venture has been signed with, or this MOU has been signed between Paras Defence and Space Technologies Limited and Heaven Drones, and they will be establishing a joint venture for the hydrogen powered drones, right? They will be first of its kind in India. If we talk about hydrogen fuel only, hydrogen powered buses has also been recently launched. They were developed by NTPC and they have been launched in Leh, Ladakh. Next, which Indian Defence PSU delivered Arnala, INS Arnala, the first of 8 indigenously developed anti-submarine warfare shallow watercraft to the Indian Navy in Kattupalli, Tamil Nadu. So, which is that organization? It is GRSE that has developed this INSSV Arnala. Moving on, identify the name of the advanced AI-based text-to-speech model that supports 11 Indian languages and that is aimed to enhance the digital voice applications launched by Sarvam AI Private Limited in May 2025. It is, what is the name of that AI-based text-to-speech model? It is Bulbul V2 and it supports 11 Indian languages. Next, mention the satellite internet service provider that received the letter of intent from the Department of Technologies making
a key step towards their commercial operations in India. It is Starlink, students. We just discussed between, and Starlink will be partnering with Jio and Airtel in India for providing the satellite internet connection in India. Next, scientists from Chinese Academy of Science, Beijing, they have launched the first ever pangenome of Asian cultivated dash by decoding the genomes of 144 wild and cultivated varieties across Asia. So, Chinese Academy of Science in Beijing, they have launched the first ever pangenome of Asia cultivated rice, right? And this was done by decoding of genome editing of 144 wild and cultivated varieties across Asia. Right? A pangenome is a complete collection of a gene in rice that includes those all by shared varieties and those unique to the certain types, that helps the scientist in understanding better and improve the rice diversity. This will make it more resilient, better output will be there quantity wise also as well as quality wise also. Next, Taiwan conducted the first live fire test of which advanced artillery system supplied by USA at the Jupeng military base in Pingtung County in Taiwan. It is HIMARS or HIMARS, right? That is your high mobility artillery rocket system supplied by USA at the Jupeng military base in Taiwan. Next, in May, where did Indian Army successfully conduct a large-scale integrated field training exercise named Teesta Prahar, demonstrating operational preparedness and the seamless coordination between combat and support units of Indian Army in challenging the riverine terrain. It is West Bengal. Next, in May, India successfully conducted the trials of its indigenously developed low-cost counter-drone system by the name Bhargavastra at the Seaward firing range in Gopalpur, Odisha. Take a note of this. And this Bhargavastra, right? It has been developed by SDAL. What is SDAL? That is Solar Defense and Aerospace Limited. Next, identify the name of the GPS global positioning system like navigation system for the moon launched by Spanish technology company group Mecania del Vuelo, that is GMV, in May 2025, right? So a GPS on moon has been launched by GMV. Question asked is, what is the name of that GPS? It is Lupin. Lupin is the name for that system. Next, mention the name of India's fully indigenous automated air defense control and reporting system, which played a pivotal role in destroying Pakistan's aerial attacks by neutralizing and intercepting every inbound projectile during the 4-day military standoff between India and Pakistan in May 2025. Question asked is, name that India's automated air defense control and reporting system. It is Akshatir, right? So all the drones, UAVs and missiles that were launched from Pakistan towards India, it were intercepted by Akshatir, and all these things were taking place during an operation by the name Operation Sindhu. Next, mention the satellite launched by ISRO aboard the PSLV C-61 from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. It is the Earth Observation Satellite 09 and it was launched using PSLV Polar Satellite Launch Vehicle C-61. Next, mention the country that launched the first batch of AI-powered satellites using the Long March 2D carrier rocket to build the world's first supercomputer in orbit. It is China. Next, identify the Indian naval sailing vessel formerly inducted by Indian Navy at Karwar Naval Base, Karnataka. What is the name of that INSV? It is INSV Conindya. Next is, in May, Aerospace Industries Limited successfully tested the India's next generation drones under the AirShield initiative, right? Take a note of this. And what are these basically? It is your, one is VTOL, vertical takeoff and landing, that is AER Recon Autonomous Reconsign Module 5, and Aircon ARM 10 has been launched here. Next is, identify the organization operating under the CSIR that successfully completed a series of pre-monsoon flight tests for its indigenous high-altitude platform prototype, making a significant advancement in India's capabilities in border surveillance and aerial monitoring. It is National Aerospace Laboratory. This is an arm of CSIR only. Next, the USA President Donald Trump unveiled a defense plan for $175 billion Golden Dome
This is a new missile defense system which will help USA in countering the foreign missile attacks that are fired towards the USA mainland. So Trump has appointed whom as the US Space Force as lead program manager. So he appointed General Michael Gwetline as the US Force as the lead program manager for this Golden Dome. This will be similar to that of Iron Dome of Israel, and it will be costing them more than $175 billion. Next, and USA will be having it by 2029. Next is, which battery technology was developed by researchers at the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bengaluru, using the Nesicon technology that can reach 80% charge in just 6 minutes and supports over 3000 charging cycles. So which is that battery technology? It is sodium ion battery technology. Next, space startup Agnikul Cosmos Private Limited, they successfully fired the India's first electric motor driven semi-cryogenic engine, which is set to power their upcoming Agniban launch vehicle, and this is the first time an engine of this kind has been developed and tested in India. Next is, mention the rare iron potassium sulfate mineral found by the Indian researchers in the arid Kutch region of Gujarat, confirming their potential as a natural geological clock for Mars exploration. So mention the rare iron potassium sulfate minerals that were found. Which is it? It is jarosite. This is the mineral and found here in Kutch region of Gujarat, and with this we can say that particular area is a natural geological clock for Mars exploration, right? We can find the similarities between Kutch, Gujarat and the surface of Mars in certain places. Next, mention the name of the company that delivered the first of 6 indigenously developed Surya very high frequency radar systems to the Indian Air Force. So which is that company we are talking about? Name that company we are talking about. Alpha Design Technologies Private Limited. They have developed these Surya very high frequency radar systems to the Indian Air Force, and they were developed with a cost of 200 crore rupees. Next, students, is our homework section. First question is, tell me who has been appointed as UK's Deputy Prime Minister. Second question, who has been appointed as the Chairman and Managing Director of NHPC. Third question, who has been appointed as the Brand Ambassador of brand Skechers and Levi's India. Fourth question, tell me recently who has been appointed as the Non-Executive Chairman of Yes Bank. Fifth question, tell me when do we observe, or tell me recently that who has recently won the US Open, both in men's category and women's category. Sixth question, who was honored with the Ballon d'Or award, both in men's and women's category. So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 26 सितंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम्स की। देन हम 4 लेन का NH 139 हाईवे की बात करेंगे, जिसको अभी बनाने की बात की गई, उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। कैबिनेट अप्रूवल्स देखेंगे एंड एक MOU डिस्कस करेंगे ताकि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके CBDT की। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. बड़ा ही अच्छा सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, बहुत कुछ रिवाइज करेंगे हम आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। यूनियन कैबिनेट किसके द्वारा चेयर किया जाता है? इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया, वर्थ 2277 करोड़ रुपीज। इसका एम क्या रहेगा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके इंस्टीट्यूशंस में, राइट, यूनिवर्सिटीज में एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। हम देखें कि जो स्टेम सेक्टर्स है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स,
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके, इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके, एंड इवन इसी के लिए मेडिकल सेक्टर में भी यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैरी आउट करा जा सके। एआई आ गया स्टूडेंट्स, एआई से रिसर्च वर्क बहुत फास्ट होता हुआ दिखेगा, एंड जो साइंटिस्ट्स हैं राइट, जो पीएचडी होल्डर्स हैं करेक्ट, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इवन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपना डाटा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल CSIR यहाँ पे अपना रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा ताकि फर्दर यहाँ पे रिसर्चर्स को राइट, जो लेबोरेटरीज होती हैं राइट, जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी रिसर्च को कैरी कर सकें। सो टेक अ नोट ऑफ इट। इसी के अलावा स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली वो फिफ्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सी बनी है इंडिया की, वो है हिमाचल प्रदेश राइट। फिर अभी 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ पर हुआ, ये दुबई में हमें देखने को मिला था, ठीक है। फिर इसी के अलावा ब्रह्मपुत्रा रिवर पर एक म्यूजिकल वॉयज हुआ था, उसका नाम क्या था, वो है विस्तीर्णा परोरे। कहाँ पर हुआ था, ब्रह्मपुत्रा के रिवर पे हुआ था, एंड भूपेन हजारिका जी की सेनेटरी को मार्क करने के लिए हुआ था राइट। फिर वर्ल्ड का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति कहाँ पे हुई, किसने लॉन्च की, इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वो है आदि संस्कृति, ठीक है। फिर इसी के अलावा इंडिया का पहला ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पर है, ये है IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी जब वहाँ पे विजिट पे थे तब इनके द्वारा इनॉग्रेट करा गया। फिर ज्ञान भारतम कॉन्फ्रेंस में किनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और चीज़, INS अरावली, ये अभी इनॉग्रेट किया गया, कमीशन किया गया, कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में इसको कमीशन किया गया, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुरुग्राम हरियाणा से स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं CCEA, इन्होंने अप्रूव किया 3822.31 करोड़ रुपीस का 4 लेन NH139 हाईवे प्रोजेक्ट। देखो दो अप्रूवल्स याद रखेंगे, पहला तो ये प्रोजेक्ट जो भी हमने देखा 78.942 किलोमीटर का रहेगा ये। दूसरा अप्रूवल आ जाता है बख्तियारपुर राजगीर तिलैया सिंगल रेलवे लाइन जो कि 104 किलोमीटर की है, 2192 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया, ठीक है, मार्क करेंगे। इसके अलावा देखें तो वर्ल्ड फूड इंडिया, इसका 4th एडिशन अभी हमें देखने को मिला था, वर्ल्ड फूड इंडिया का राइट। इसको इनॉग्रेट किया गया किनके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। लोकेशन क्या रहेगी, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही पहला इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया गया। ये कहां पे रहेगा, ये असम में लोकेटेड है, ठीक है, बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट इंडिया का पहला। फिर इसी के अलावा सरपंच संवाद, ये सरपंच संवाद कॉन्फ्लिक्ट किसके द्वारा होस्ट की गई, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट, फिर अगर हम यहीं पे किसी न्यूज़ में देखें तो नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था PM गति शक्ति 13 अक्टूबर 2021 को, ये मार्क करेंगे राइट। इससे क्या है, बेसिकली हम अपनी जो लॉजिस्टिक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कैबिनेट अप्रूवल्स पे, 3822.31 करोड़ रुपीस के, ये बेसिकली हमने अभी पीछे देखे थे CCEA अप्रूवल्स, और अब हम देख रहे हैं कैबिनेट अप्रूवल्स। ये जो कैबिनेट अप्रूवल्स हैं, क्या यूनियन कैबिनेट किसके द्वारा चेयर की जाती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की जाती है। यहाँ पे 2 अप्रूवल्स देखेंगे हम, कौन कौन से अप्रूवल है। पहला अप्रूवल है प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस का, जहाँ पे 78 डेज तक रेलवे एम्प्लॉयज को यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा राइट। इसी के अलावा यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड अप्रूवल आ जाता है आपका एक्सपेंशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट सीट्स जो मेडिकल कॉलेजेस में वो बढ़ा दी गई हैं टू 5000 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड 5023 फॉर अंडर ग्रेजुएट राइट, मार्क करेंगे। फिर इसी के अलावा 18वां एडिशन ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस जो कि है VR इंक्लूजन, ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है, शारजा में ये शुरू हो चुकी है राइट। इसी के अलावा किस कंट्री के द्वारा वर्ल्ड का पहला AI मिनिस्टर लॉन्च किया गया है ताकि करप्शन को ये खत्म कर सके, अल्बेनिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी के अलावा याद रखेंगे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने भी एक MOU साइन किया है CBDT के साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ, ताकि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके राइट। जो हमारी ऑडिट्स हैं उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इवन अब AI के आने से हम देखेंगे जो ऑडिटिंग है वो और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखेगी। मैनेजमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन राइट, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, रिसर्च के ऊपर काम किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया जाएगा अंडर दिस MOU
करेक्ट स्टूडेंट्स। फिर इसी के अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो अगस्त में जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो 2.07% था, राइट। फिर इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट इंडिया को $128 मिलियन ये प्रोवाइड कराएगा, सॉरी $126 मिलियन प्रोवाइड कराएगा एज अ लोन, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके, सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर काम किया जा सके उत्तराखंड में, राइट। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी होती है उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा के 50,000 कर दिया है। ये ऑटो स्वीप क्या होता है, आपके अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए हैं, राइट, तो ऑटो स्वीप होता है 50,000 तक तो आपके अकाउंट में रहेंगे, बाकी 50,000 की ऑटोमेटिकली आपकी एफडी हो जाएगी। फिर जैसे ये 50,000 खत्म होने लगेंगे आपका पैसा एफडी से आके ऑटोमेटिकली स्टोर होता रहेगा, 50,000 तक मैक्सिमम आपके अकाउंट में रहेंगे, उससे ऊपर जितना पैसा होगा वो सारा एफडी में जाता रहेगा, राइट। तो एसबीआई के द्वारा 50,000 लिमिट यहाँ पे कर दी गई है, अब थ्रेशोल्ड लिमिट कर दी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया एईपीडीए का पहला रीजनल ऑफिस जो कि पटना बिहार में रहेगा। ये आपदा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इससे क्या होगा, बिहार में जो आपके फार्मर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफपीओज हैं, उनको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के अलावा 15वें वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडिया के, वो हैं सीपी राधाकृष्णन। ये फॉर्मर गवर्नर है कहाँ के, महाराष्ट्र के। फिर हीरो मोटरकॉर्प की अगर हम बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं, हर्षवर्धन चिटाले जी। फिर इसी के अलावा अगर पूछा जाए कि अभी जैसे गवर्नर के मैंने बताया कि 15वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए सीबी राधाकृष्णन जी, तो इनकी पोजीशन पे जो कि गवर्नर की पोजीशन थी ऑफ महाराष्ट्र कौन आए हैं, आचार्य देवव्रत जी, जो कि गुजरात के गवर्नर हैं, उनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने एमओयू साइन किया जेप्टो के साथ ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की बात की जाए। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जेप्टो 10,000 तक की जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा लोगों को। एंड इवन यहाँ पे ई श्रम पोर्टल के ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई, जिससे जो गिग वर्कर्स हैं उनको जो भी स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन, वो सारी इवन अपस्किलिंग वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के द्वारा के लिए यहाँ पे जेप्टो ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ ये एमओयू साइन करा। फिर इसी के अलावा एक और चीज याद रखेंगे, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, इंजेटी श्रीनिवास। फिर इंटर्म प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है नेपाल की, सुशीला करकी जी। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। अभी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये भी विजिट पे थे टू मोरक्को 22 से 23 सितंबर तक। इनकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पहली बार हुआ है कि फर्स्ट एवर विजिट है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की टू नॉर्थ अफ्रीकन नेशन यहाँ पर, राइट। एंड इन्होंने डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर एमओयू साइन किया। इस विजिट यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना इस न्यूज़ का स्टूडेंट्स, वो ये है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इन्होंने अपना एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करा है, कहाँ पर, मोरक्को में, राइट। एंड ये अफ्रीका का वन ऑफ द बिगेस्ट रहेगा, मोरक्को का वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेगा जो कि अफ्रीका में है, जो कि इंडिया के द्वारा भी, इंडिया की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा वहां पे एस्टेब्लिश किया गया है। एंड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 व्हीकल्स को यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर अभी रिसेंटली एनआईपीएल जो कि है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इन्होंने कतर नेशनल बैंक के साथ यहाँ पे पार्टनर किया ताकि यूपीआई पेमेंट सर्विसेज लाया जा सके इंडियन ट्रैवलर्स के लिए जो कतर में ट्रैवल करते हैं। इससे कतर 8वीं कंट्री बन गया है जहाँ पे अब यूपीआई की फैसिलिटी आ गई है। इससे पहले जैसे अगर हम देखें तो भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, इन सभी जगह पे देखने को मिली, और अब कतर 8वीं कंट्री बन गया जहां पर हमें ये सर्विसेज देखने को मिलती हैं आपकी यूपीआई की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। इसी के अलावा अगर आपसे और क्वेश्चन पूछूं मैं, जरा बताओ, अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इनके डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, राइट। अगर यहीं पे हम बात करें नेशनल टीचर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया 2025 में, तो वो है सिक्किम के कर्मा टेम्पो, राइट, इनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर। फिर अभी इसरो ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक अग्रीमेंट साइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी। 100th ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, जिससे इंडिया की स्पेस सेक्टर को बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट है आरबीआई ने साइन किया एक रिन्यूड SOC टू FX ग्लोबल ट्रेड। SOC है स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू FX ग्लोबल
कोड, राइट। इससे होगा क्या, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो एज पर दिस आरबीआई ने एक्ट किया एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट एज डिफाइंड बाय द कोड एंड इट इज कमिटेड टू कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ द कोड हेयर, राइट। इससे इंश्योर होगा कि आरबीआई कंडक्ट करे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज को, राइट। ये जो कोड है इसको डेवलप किया गया था अंडर द पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल बैंक्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड वाइड एंड पहली बार इसको पब्लिश किया गया था 2017 में, राइट। एंड यहाँ पे कोड का एम क्या रहेगा बेसिकली कि एक सेट ऑफ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स यहाँ पे सेटअप किए जा सके फॉर गुड प्रैक्टिसेस इन द फॉरेन एक्सचेंज, जिससे इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग हमें बढ़ती हुई दिखेगी ऑफ द होलसेल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लेस। इसी के अलावा स्टूडेंट्स इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया एट द ज़ैपेड एक्सरसाइज, जो कि रशिया एंड बेलारूस के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। देन इंडिया होस्ट करेगा अभी 2027 में 5th एडिशन ऑफ द कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु में होस्ट करने वाला है, राइट। फिर इंडिया की तरफ से अभी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया पैसिफिक रीच में। इस पैसिफिक रीच में इंडिया से किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस निस्तार का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, फिर सेबी ने रेज किया कस्टोडियन नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को टू 75 करोड़ रुपीज फॉर रिस्क मैनेजमेंट। पहले ये लिमिट 50 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़ा के 75 करोड़ की कर दी गई है ताकि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके, राइट। नेट मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर कस्टोडियंस 50 करोड़ से बढ़ा के अब 75 करोड़ कर दिया गया है। एंड यहाँ पे एज पर द प्रोविजंस जो नई रेगुलेशंस हैं ये 6 महीने में आ जाएंगी एंड 6 महीने में जब ये लागू हो जाएंगी उसके 3 साल के अंदर यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कस्टोडियंस हैं उनको इस नई कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट याद रखेंगे अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने इंडक्ट रिसीव किया सेकेंड इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बाय द नेम एंड्रोथ, राइट। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है एंड ये डिलीवर किया क्या टू द इंडियन नेवी। फिर इसी के अलावा अभी रिसेंटली याद रखेंगे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती गई मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। मूविंग ऑन, आरबीआई ने अलाउ किया स्टैंडअलोन ट्रेडर्स को टू ट्रेड इन द रुपी इन द एनडीएफ मार्केट। एनडीएफ मार्केट क्या होता है, एनडीएफ मार्केट होता है आपका नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। ये एक ऑफशोर मार्केट होता है जहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑन करेंसीज पहले ही सेटल कर दिया जाता है विदाउट द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द करेंसी, करेक्ट। तो आरबीआई ने अलाउ किया स्टैंडअलोन ट्रेडर्स को टू ट्रेड इन रुपीज इन द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। इसी के अलावा अगर पूछा जाए मेंस एशिया कप, मेंस हॉकी एशिया कप 2025 में किन्होंने जीता, तो इंडिया ने जीता। इंडिया ने साउथ कोरिया को फाइनल्स में हरा दिया बाय 4-1। अगर वीमेंस कैटेगरी की यहाँ पे बात करें तो इंडिया की टीम रनर अप के तौर पर रही, मतलब सेकंड पोजीशन आई, ठीक है। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि हम ग्रैंड पेरेंट्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 8 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो क्रोल के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट, जहां पर विराट कोहली ने इस ब्रांड में इस इंडेक्स में टॉप किया वे $231.1 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ। सेकंड पे आ जाते हैं रणवीर सिंह, फर्स्ट कोहली, सेकंड रणवीर सिंह, देन शाहरुख खान, देन आलिया भट्ट एंड देन सचिन तेंदुलकर। मूविंग ऑन, इंडिया इनको अभी ICAO काउंसिल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ICAO क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट से इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एस्टैब्लिशिंग एन इन इफेक्टिव एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम के लिए, राइट। एक सेफ्टी सिस्टम बनाया है, सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम, जिससे जो प्लेन सेफ्टी है वो बढ़ती हुई दिखेगी, बेटर मॉनिटरिंग होती हुई दिखेगी एंड इससे जो भी एक एरर्स हैं वो यहाँ पर खत्म होते हुए दिखेंगे एंड ओवरऑल सेफ्टी बढ़ती हुई यहाँ पर हमें दिखेगी। ये सर्टिफिकेशन दिया गया एज अ रिजल्ट ऑफ ICAO, इनकी प्रॉपर यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम हुआ था जहां पे कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग की गई, राइट। एंड इसके बाद यहां पे इंडिया को सम्मानित किया गया विद दिस ICAO काउंसिल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट के साथ, मार्क करेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं तो ACC ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ जनरल अनिल चौहान एज द CDS as the Chief of Defence Staff and the Secretary of Department of Military Affairs। 30 मई 2026 तक इनका यहाँ पे टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं DRDO एंड SSC, इन्होंने कंडक्ट किया टेस्ट लॉन्च ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम RBML। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये अग्नि प्राइम मिसाइल है ना, इसको रेलवे की मदद से यहाँ पे लॉन्च किया गया, राइट।
RBML रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेन का इंजन एंड यहाँ पे बीच में ये पीछे इसके यहाँ पे ये लॉन्चर है, जिसके मोबाइल लॉन्चर है, मतलब कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये एक मोबाइल लॉन्चर है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। तो इससे इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है वो बढ़ता हुआ दिखेगा एंड ये काफ़ी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च है, जिससे हमारा जो नेशनल रेलवे नेटवर्क है उसमें हम कहीं पे भी जाकर इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, अग्नि प्राइम मिसाइल को। ये एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है, राइट, इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल। 2000 किलोमीटर तक का इसका रेंज देखने को मिलता है। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसरो एंड शेंडर इलेक्ट्रिक। ये शेंडर इलेक्ट्रिक बेसिकली फ्रांस की कंपनी है। तो इनके द्वारा एक पार्टनरशिप एक्सटेंड करी गई फॉर स्पेस मिशन ऑटोमेशन, राइट, कि ऑटोमेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। एंड एआई आ गया स्टूडेंट्स, अब तो ऑटोमेशन और बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। इवन इससे पहले हमने देखा कि इन दोनों ने चंद्रयान 3, राइट, निसार, इनके ऊपर भी मिलकर ऑटोमेशन के ऊपर काम करा है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। 2026 के AFC फुटसॉल एशियन कप क्वालिफायर्स की बात करेंगे एंड इंडिया रजिस्टर्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल विक्ट्री इन द फुटसॉल, राइट, इस गेम में। टेक नोट ऑफ दिस, कुवैत में ये इवेंट हमें देखने को मिला था एंड ये 18th एडिशन था जो कि इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स ऑबिट्री के ऊपर। कन्नड़ा नॉवेलिस्ट एंड पद्मा अवार्डी SL भैरप्पा जी, इनका निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। 1931 में इनका जन्म हुआ था। इनको पद्मश्री से 2016 में सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से 2023 में सम्मानित किया गया था एंड साहित्य अकेडमी फेलोशिप से 2015 में इनको सम्मानित करा गया था। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। नेशनल आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसका 10वां एडिशन ऑब्जर्व किया गया कि आयुर्वेदा का इंपॉर्टेंट रोल कि ये वाइड रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करने के काम आती है। इसी की थीम याद रखेंगे, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट यहाँ पे थीम रहेगी। पहली बार 2016 में इसको ऑब्जर्व करा गया था। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फार्मासिस्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि इनके इकोसिस्टम से, राइट, एंड जो ये एक कम्युनिटी बनाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, दवाइयां हमारे देते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम याद रखेंगे, थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। मूविंग ऑन, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, मार्क करके चलेंगे। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राइट, जो कि फॉर्मर भारतीय जनसंघ प्रेसिडेंट एंड फिलोसफर रह चुके हैं। इनकी इस साल हमने 109वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी, राइट। और अगर डे की बात करें तो 2014 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, पहला अंत्योदय दिवस को, राइट। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। मेंशन द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिन्होंने रिसीव किया एक लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि एक की स्टेप है टुवर्ड्स कमर्शियल ऑपरेशंस इन इंडिया। हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ये है स्टारलिंक। नेक्स्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस बीजिंग, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर पेंजियम ऑफ एशियन कल्टिवेटेड राइस को, राइट, जो कि डिकोड किया गया है बाय द जीनोम्स ऑफ 144 वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड वेराइटीज अक्रॉस एशिया। ये बेटर होगा आपका, इससे हीट रेजिस्ट, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगा, बेटर आउटपुट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। नेक्स्ट, ताइवान ने कंडक्ट करा फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट ऑफ विच एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम, जो कि सप्लाई किया गया बाय USA एट द ज्विपिंग मिलिट्री बेस इन पेंगटुगन काउंटी ऑफ चाइना। तो ताइवान ने कंडक्ट किया फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट किस चीज़ का, ये था आपका हिमर्स का, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये है हिमर्स, है आपका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एंड ताइवान को डिलीवर किया गया बाय USA, राइट, बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेंशन जो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्ट अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज, तीसरा प्रहार जो हमें देखने को मिली। तो ये तीसरा प्रहार एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में हुई थी। इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा ट्रायल्स ऑफ देयर इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है भगवस्त्रा, राइट, एट द सीवर्ड फायरिंग रेंज इन गोपालपुर, ओडिशा। SDAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द GPS लाइक नेविगेशन सिस्टम, जो कि मून के लिए डेवलप किया जा रहा है। स्पेनिश कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, GMV कंपनी का नाम रहेगा। इसका नाम क्या है जो मून पे GPS लॉन्च किया जाएगा, तो वो है ल्यूपिन। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज फुल्ली इंडिजीनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दैट प्लेड अ पाइवटल रोल इन डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान का एरियल अटैक्स। यहाँ पे 7 जगह पे इंडिया के द्वारा अटैक किए गए थे। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर,
राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजिनियसली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने वापस इंडिया पे यूएवीज, ड्रोन्स, मिसाइल से जब अटैक किया तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंडिया का सिस्टम था उसका क्या नाम है, वो है अक्षतीर, ये पूछा गया। और उस ऑपरेशन का जो इंडिया ने लॉन्च किया था वो है ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट, मेंशन द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो यूजिंग PSLV C61 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ये वो सैटेलाइट का नाम है जो कि इसरो के PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिसने लॉन्च किया फर्स्ट बैच ऑफ AI पावर्ड सैटेलाइट्स यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट, राइट, टू बिल्ड द वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर ऑर्बिट में ही, राइट, सुपर कंप्यूटर बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे कौन कर रहा है, ये चाइना के द्वारा करा जा रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल फॉर्मली इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एट करवार नेवल बेस, कर्नाटका। तो क्या नाम है उस INSV का, वो है INSV कौनिंद्या। नेक्स्ट, एयरस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स को अंडर द एयरशील्ड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर CSIR, जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया सीरीज ऑफ प्री मॉनसून फ्लाइट टेस्ट फॉर देयर इंडिजीनियस हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप, जो कि एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इंडिया की कैपेबिलिटीज़ में इन बॉर्डर सर्वेलेंस एंड एरियल मॉनिटरिंग। तो वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये CSIR का ही नाम है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इनके द्वारा ये टेस्ट कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर अभी USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक डिफेंस प्लान अनवेल किया, $175 बिलियन का ये प्लान रहेगा फॉर गोल्डन डोम। गोल्डन डोम क्या है, ये सिमिलर है आपका आयरन डोम जैसा, जो कि इसराइल का है, जो कि इनकमिंग थ्रेट्स को, मिसाइल्स को, UAVs को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो सिमिलरली USA की मेन लैंड की तरफ जब कोई मिसाइल या ड्रोन आएगा तो उनको न्यूट्रलाइज करने का ये गोल्डन डोम काम करेगा। 2029 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। $175 बिलियन यहाँ पे खर्च होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, राइट, इन्होंने अपॉइंट किया किनको ऑफ US स्पेस फोर्स एज द लीड प्रोग्राम मैनेजर। तो माइकल ग्वेटलिन यहाँ के लीड प्रोग्राम मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं फॉर दिस गोल्डन डॉम। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, जो कि बेंगलोर में है, यूजिंग नेसिकॉन टेक्नोलॉजी, जो कि 80% चार्ज कर सकती है बैटरी खुद को 6 मिनट के अंदर एंड 3000 चार्जिंग साइकिल्स तक ये ऑपरेट कर सकती है। तो ये है सोडियम आयन बैटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली फायर किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन को टू पावर द अपकमिंग अग्निबाण लॉन्च वीक। इसके बाद आ जाते हैं, मेंशन करो उस रेयर आयरन पोटेशियम सल्फेट मिनरल का जो कि इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा कच्छ रीजन में फाइंड किया गया ऑफ गुजरात, जो कि नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक है फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन। मतलब जैसा यहाँ पे वो इन्वायरमेंट हमें जो मटेरियल मिनरल्स देखने को मिले, सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल मिनरल्स हमें मार्स की सरफेस पे देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ पे रिसर्च करने के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाता है कच्छ गुजरात को, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हमें मार्स पर देखने को मिलेंगे। तो क्या देखने को मिला है यहाँ पर हमें कच्छ में, यह है जेरोसाइट, राइट, जो कि आयरन पोटैश सल्फेट मिनरल है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया फर्स्ट ऑफ द 6 डेवलप्ड सूर्य वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम्स को टू द इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम है उसका, वो है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। 200 करोड़ की ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। Next students is our homework section. First question is, tell me who has been appointed as UK's Deputy Prime Minister. Second question, who has been appointed as the Chairman and Managing Director of NHPC. Third question, who has been appointed as the Brand Ambassador of brand Skechers and Levi's India. Fourth question, tell me recently who has been appointed as the Non-Executive Chairman of Yes Bank. Fifth question, tell me when do we observe, or tell me recently that who has recently won the US Open, both in men's category and women's category. Sixth question, who was honored with the Ballon d'Or award, both in men's and women's category. So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.